Yeah. Yeah, so we are live on Facebook. We'll pause for a couple of minutes for people to join, and then we'll start. Okay, here we go. So, namaskar, everybody. On behalf of Global Kashmiri Pandit Diaspora, we welcome you again to a very special edition of Meet the Stars. So, we've had a few episodes. बहुत ही interesting episodes हुए हैं last week में. We have met the stars of the Kashmir Files movie. And it has been fascinating to go with them on their journey of the movie. So today we are especially excited, very excited, because we have got our very own Kashir Kur Bhasha Sumbli with us. So welcome, Bhasha ji. Oh, I'll not call you Ji, you're much younger than me. So I'll call you Bhasha. So we are so proud and honored to have Bhasha ji here, Bhasha here. And Bhasha, everyone knows. I would also like to introduce my co-host, Nirja Sadhuji. So Nirja Sadhuji has been co-hosting with me these special events. And welcome, Nirja ji. So Bhasha, coming back to you. So how nice to see you here. It's absolutely wonderful to see you here. I haven't seen the movie. Nirja ji has, because she lives in the US and I live in London. So, but we are all looking forward to seeing the movie on 11th of March. So, so Bhasha, it's I got your bio. It's a very, very fascinating and very interesting and a very varied bio. So, and as long as my right arm. But I'll start with the main bits for the audience sakes. So Bhasha was born in Srinagar, Kashmir. She is not just an actress. She's a performance maker, playwright, stage and film director. She has performed in national, international theatre festival, Indian films, from Bandapathar, Ladisha, to her acclaimed short films on the culture and tradition of the Kashmiri language. She has also published various papers on Indian performing arts. She has produced, directed many radio dramas. She has dubbed for Kashmiri version of American series Sesame Street, which really interested me when I heard from her this morning. She has won awards. She's won theatre awards, the Inlax Theatre Award. She has taught acting. So really, there's nothing you haven't done, Basha. So you've taught students at Actor Prepares, and she has prepared kids and mentored them for a host of serials like India's Best Dramebaz, Sabse Bada Kalakar, etc., etc. Now, you are here, Bhasha, to talk about the Kashmir Files, a movie we are all waiting for. So without much ado, I will let you carry on. I will ask you a very open question, which is really from me. You know, in Kashmiri community mainly, and all Indians, you know, people say, "Oh, well, children, let's make them doctors, engineers, or more lately IT." And here we have an actress, a playwright, and you know, a fascinating journey. Do you want to take us through how you got into theater? You know, how you're, you know, thanks to your parents as well, to encourage you, how they encouraged you, and now you are our bright star. So Bhasha, do you want to take us through your theater journey, how you landed where you are now? सबसे पहले नमस्कार दीदी, thank you so much for inviting me to this show. It's such an honor for me, and especially आज मुझे बहुत special लग रहा है because it's a show hosted by my very own people, and मुझे बहुत free भी लग रहा है. मतलब I'm not otherwise थोड़ा हो जाता है ना कि मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है I can shift between Kashmiri, Hindi, English, whatever. I feel very very honored, very honored. But at the same time, thank you for that sweet introduction, very kind of you. So yes, मैंने theater
कैसे चुना. The journey began by after I completed my graduation. I had actually qualified for mass communications in Jamia Millia also, at the same time in Indian Institute of Mass Communications also, IIMC, and also I had cracked National School of Drama. तो फिर मेरे पास choice थी, तो मेरे घर वालों ने कहा था कि it's up to you, and I'm really thankful to my parents कि उन्होंने कहा कि very honored. ऑडियो का डिले है क्या कुछ? No, it's okay. Audio? No, it's okay. It's okay. अच्छा. So they encouraged me to pursue Bhand Pathar and go further in National School of Drama. क्योंकि मेरी शुरुआत क्या हुआ कि मोतीलाल केम्मू साहब जो डॉइन ऑफ भांड पत्थर रहे हैं कश्मीर में, उनसे शुरुआत हुई सीखने की. तो आई हैव लर्नड फ्रॉम फोक. तो मेरे रूट्स काफी आई एम क्वाइट मतलब अपने नेटिव कल्चर में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे. तो मुझे उससे ये लगा कि एंड यू नो लड़ीशा जैसा फॉर्म जो एक्सटिंक्ट हो रहा है. सो इनफैक्ट मेरे एनएसडी के इंटरव्यू में भी मैंने वही परफॉर्म किया था. दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड आई टोल्ड देम दैट माय एंटायर पर्पस ऑफ learning arts is to only to preserve especially the arts and culture of my area, because that is such a disturbed zone जिसमें आर्ट सबसे पहली कैजुअलिटी होती है जब भी एरियाज डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और व्हाटएवर. तो द फर्स्ट कैजुअलिटी इज आर्ट एंड कल्चर. तो आई फोकस्ड ऑन लड़ीशा. आई हैड प्रिपेयर्ड लड़ीशा, आई परफॉर्म्ड लड़ीशा एंड दे क्वाइट लाइक्ड इट. और सो हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ भांड पत्थर, so I learned everything that they had to teach in National School of Drama. So that and I'm really thankful at a time when people were going towards engineering and MBBS as a norm, my parents encouraged me to go for National School of Drama and pursue my acting career as an actor, as a theater artist, and ऐसा ही चलता रहा है. उसके बाद जी. So wow, that is so amazing. So like I said, you know, thanks to your parents as well that you're here. So from National School of Drama, then you started working in theater and films, and is that how it goes? So as I told you, my purpose of getting into the National School of Drama was only to do meaningful art and to preserve the art that you know that is the sole identity of my land, for example. So तो उसके लिए जैसे मैं आगे चल के मुझे पता था कि मुझे थिएटर करना है, इसी सब्जेक्ट पे करना है, या इन चीजों को प्रिजर्व करते हुए करना है, या इनका कुछ एमैल्गमेशन करते हुए करना है. फॉर एग्जांपल यू नो लड़ीशा एंड स्टफ. आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. हमारा एनएसडी में बहुत अलग अलग टाइप के इनपुट्स होते हैं. So one of the inputs was this 3,000-year-old called art form from Kerala called Kudiyattam. So when we were learning that, there was this entire episode when Ravan lifts the Kailash Parvat. So I had experimented and done the same thing in Ladisha form, because that's how I want to preserve my form. Wow. So the text was from ancient Sanskrit Mahakavi Bhas. The text was very ancient और वो बहुत ही ट्रेडिशनली देखा जाए तो वो कथकली या कुडियाट्टम में होता है. बट मैंने कहा मैं मेरे फॉर्म को बचाने के लिए मैं मेरे फॉर्म में इस टेक्स्ट को डालूंगी. एंड आई परफॉर्म दैट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड माय गुरुजी वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट एफर्ट. सो आई थिंक दैट तो मेरा सारा पर्पस जो है वो मीनिंगफुल आर्ट करने का है. इसलिए जो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद भी आई अप्रोच्ड मुंबई, और मुंबई में भी मैंने कहा कि जो भी यू नो स्ट्रगल टुवर्ड्स establishing yourself as an actor or a filmmaker और जो भी है, तो उसके लिए I have to sustain myself, support myself. So I joined Actor Prepares, the institute, the school for actors, and I started teaching there. तो उस तरह से मैंने खुद को, because अपना background ऐसा नहीं है कि you know घर से पैसा लेके अपना बॉम्बे में. So that's very impressive. Yeah. तो वही आत्मनिर्भर स्ट्रगल करनी थी यहाँ पे भी. Yes. So you know what I find impressive in what you've just said is, you know, I'm much older than you, and I've been brought up listening to Ladisha and Bhand Pathar. And when I was really young, I remember being very bored because I didn't understand the whole. You know, when I was young, it was a regular feature in our house because my dad is
also retired from Radio Kashmir. So this was, I Oh. used to go and watch Band Patha, but that was forced on me, you know, because I Right. had to accompany my parents, and I had to meet, you know, we had Muhammad Subhan Bhagat ji that time, and his troop. But so I used to go, I have watched a lot of that, but I used to get really bored. And so now that you are reviving the whole thing, that is so amazing. So are you kind of trying to modify it so that it becomes easily, you know, our children who are now in Exodus, like all of us, for them it's slightly a bit of a struggle, isn't it, to understand the whole thing? बिल्कुल. और आपका जो आपने बड़ा फ्रैंकली अपना बोर होना भी बताया, I would say I'm totally, I relate with you. Because जब चीज हमारे पास होती है तो we have the luxury of getting bored. But when we realize that the thing is lost, we suddenly fall in love with that thing. And of course, as a performance maker or somebody who is into the creative arts, I try कि जो भी मैं कंटेम्प्ररी कर रही हूँ, चाहे मैं कंटेम्प्ररी हो या कुछ भी हो, लाइक आई राइट प्लेज. एंड इनफैक्ट आई वुड से जब कश्मीर फाइल्स मुझे मिली, मेरे घर में रिहर्सल्स हो रही होती थी शाम को. दिन में मैं ऑफिस में होती थी, शाम को मेरे घर में रिहर्सल्स हो रहे होते थे नाटक के जो मैंने लिखा था. सो इन दैट प्ले ऑल्सो आई वुड से द सॉन्ग्स दैट आई हैड रिटन, they were in folk style, जो अपना कश्मीर के कुछ folk बड़े ही टिपिकल कुछ गाने हैं जो हमारे जबान पे बैठे हुए हैं, जिनका ऑब्वियसली कोई कॉपीराइट नहीं है. सो मैंने वो उस स्टाइल में वो गाने रखे थे. द प्ले इज क्वाइट लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड एवरीथिंग, बट आई वांटेड दैट दोस कश्मीरी धुन्स टू गेट, आई डोंट नो, पॉपुलराइज तो नहीं कह सकते, बट पता नहीं वो मेरा कनेक्ट है उस मेरे कल्चर के साथ कि मैं उसी में उसको इमेजिन कर पाती हूँ. सो वो कश्मीरी पुट आ ही जाता है कहीं ना कहीं, दैट आई कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम माई आर्ट, फ्रॉम माई सेंसिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट. Absolutely. So from Kashmir to the Kashmir Files, it has been a very long and interesting journey. I have heard so much about your role. I'll let Nija ji come in a minute. All I've heard is, you should really see Bhasha. Bhasha is absolutely amazing in the movie. So obviously a very proud moment for us while we wait to. So can you we'll start off with how you got into the movie. I've heard you before, and you said it wasn't easy. It's never easy, is it, to get into movies? But you persevered. Do you want to take us through your journey of how you auditioned and what it was like for you? हाँ बिल्कुल. So I had just recently done a very short cameo in Chhapak, another movie that was a very subject-based, sensitive movie. So उसके just उन्हीं दिनों की बात है कि I got to know, क्योंकि J&K में मैं उन दिनों जम्मू में थी, तो I got to know कि विवेक सर is looking for actors because उन्होंने announce की थी just उसी समय. तो क्या हुआ था कि जो हमारा वो 5 अगस्त 2019 का जो डिसीजन था अपना 370 के एब्रोगेशन, उसके बाद काफी लंबे समय तक, आई थिंक जनवरी तक, हमारे बिकॉज ऑफ श्रीनगर का शटडाउन ऑफ इंटरनेट, जम्मू वाज आल्सो सफरिंग. ऑल्दो जम्मू वाज सेलिब्रेटिंग द एब्रोगेशन ऑफ 370, बट एज इट ऑलवेज हैपेंस, जम्मू सफर्स. तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तो आई डिडंट हैव एक्सेस टू कनेक्ट टू हिम एंड रीच आउट. क्योंकि जब मुझे पता चला, and I knew that this is coming from the makers of the Tashkent Files, so people who are actually doing research based and films that are focusing on the truth. So it's not just another film on Kashmir. तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल हो गया वहीं से. एंड मेरे मन में ये था कि मैंने प्रण कर लिया कि बतौर एक्टर अगर मेरे लिए कोई जगह हुई तो अच्छी बात है, अगर, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था, अगर नहीं होता है तो भी आई वुड लव टू कनेक्ट इन एनी कैपेसिटी, एज एन असिस्टेंट, रिसर्च में, आर्ट में, किसी भी तरह से, कॉस्ट्यूम में, किसी भी तरह से. आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. सो उस ईगरनेस से आई समहाउ गॉट माय, मतलब किसी तरह से कनेक्ट किया सर से. एंड उसके बाद फिर हमारा वो इंटरनेट रिस्टोर हुआ था, उनके बाद तो आई रीच्ड बॉम्बे एंड मैंने सर के सामने ऑडिशन दिया. एंड सर और मैम दोनों को पसंद आया, सो दे कॉल्ड मी एंड उन्होंने कहा कि शारदा पंडित एक रोल है, काफी संजीदा और मतलब सेंसिटिव कैरेक्टर है, और पोर्ट्रेयल, उन्होंने कहा कि जस्ट ट्रस्ट मी, आई विल डू इट वेरी एस्थेटिकली. द रोल इज क्वाइट, क्या बोलूं उसके लिए, कोई शब्द ही नहीं, बहुत डिस्टर्बिंग है. और आई रिमेम्बर जब हमारी रीडिंग्स हुई, जब हमारी ऑफिस में पहली रीडिंग हुई स्क्रिप्ट की, तो पहले दिन हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा एंड द नेक्स्ट डे वी रेड द अनदर हाफ. तो फर्स्ट हाफ तक जैसे जैसे पढ़ा तो वो सिंक इन हो रहा था उसमें, नॉट जस्ट द रोल बट द एंटायर जो उसका पर्सपेक्टिव है फिल्म का,
बाकी कैरेक्टर्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उनका जो इंटरकनेक्शन है साथ में. एंड जब आई रिमेम्बर जब खत्म हुआ रीडिंग, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा टिश्यू से तो आंखें पहुंच ही रहे थे क्योंकि नम हो रही थी. मैंने बहुत देर तक रोका था, तो मुझे ये याद है कि मैं लास्ट में फूट फूट के रोई जब उसमें स्क्रिप्ट में लिखा था कि जैसे जैसे क्लाइमेक्स तक पहुंचती है मूवी, तो मैं फूट फूट के रोई. और फिर धीरे धीरे सब लोग निकल के, दे गेव मी दैट प्राइवेसी कि भाई रो ले, ठीक हो जा. सो आई टुक सम टाइम एंड आई गॉट बैक. एवरीबॉडी वाज डिस्टर्ब्ड, एवरीबॉडी क्राइड, बट पता नहीं मुझे ऐसा, क्योंकि आप होता है ना, बीइंग ए कश्मीरी यू कनेक्ट मोर, एंड आप जब सुनते ही हो, तो मुझे लगा मेरा शूट पे क्या हाल होगा. बट मैंने कहा ठीक है, ये तो एक तरह से एक मतलब यज्ञ है जो 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 हो रहा है, और सबको अपनी आहुति किसी भी तरह से इसमें देनी है. सो आई वाज वेरी लकी, सर ने मुझ पे ट्रस्ट किया. हालांकि उन्हें मुझे कहा था कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो. सो स्वीट ऑफ हिम. ही सेड कि मैं एस्थेटिकली इसको करूंगा, बहुत सेंसिटिवली हम लोग इसको करेंगे, यू वोंट हैव टू वरी. एंड और वैसा ही हुआ फिर शूट पे. द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज वेरी वेरी केयरिंग, वेरी सेंसिटिव. क्योंकि ये चीजें ऐसी ना कभी हावी हो जाती हैं आप पे. और मुझे याद है मैंने पल्लवी मैम को बोला उस दिन की, सॉरी आई डोंट थिंक आई एम ए गुड एक्टर, क्योंकि हावी भी हो गया मुझ पे काफी, मुझे थोड़ा पैनिक अटैक सा आया. तो मैम ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज ऐसी है, फिर तुमने सुना है इतनी बार, और इट्स अ पार्ट ऑफ माय बीइंग. Absolutely. And if it is happening again with me, so definitely it's going to take toll on some aspect of myself. So let's see now. Yeah, absolutely. So Basha, I'm just reminded of one thing which I heard, I think from Palvi, that on shoot you made them Kashmiri dishes one day, Monje and Damalu, just to yeah. And I actually did see a picture, and I saw all these delicacies there. So yeah, that is so amazing. Thank you so much for doing that. That must have been hard work for you, in the middle of a shoot to make all these dishes. No, I totally enjoy cooking. So actually, it was needed in one of the sequences. It was needed, some Kashmiri dishes were needed. तो मैंने पिछली रात को ही जाके, and उसके लिए बहुत क्रेडिट जाता है हमारे जो मसूरी देहरादून के जो लोकल कश्मीरीज हैं, खासकर राजेंद्र गन्हार जी का मैं नाम लूंगी. उनके घर पे मैंने वो पकाया. मैं उनके घर पे मैंने धावा बोला. सब्जी मंडी से सब्जियां लाई. मैंने कहा महारा तो दियो मैं किचनुक एक्सेस आज कर सोरे, और आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी. बट वो तो मेरा कहना था. उनकी वाइफ ने पूरी मदद की. राजेंद्र गन्हार जी ने खुद दमोलू के ना वो सारे, उन्होंने उसके छिलके उतारे. मैंने कहा चलो इनको गद करके दो. और आंटी ने भी खूब मदद की. उन्होंने मेरे को पूछा इच्छे तागान छे या सचल छे तागान राने. मैंने कहा हाँ आती तो है, मगर फिर वो होता है ना, जब कोई एक्सपर्ट आपके साथ होता है तो ऑब्वियसली वो फीलिंग आती है. So they have been, the entire family has been very supportive, and all the local Kashmiris in the Dehradun Mussoorie. I remember कुछ दिनों पे तो वो लोग अपने घरों से खाना भी लाते थे. तो बहुत ही रेयर जो डेलिकेसीज होती हैं. हाँ, नादर जुर्म इसकुन सातानान, कभी मोंझाक आता था, कभी मोंझाक आचार आता था. तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि वो पूरा वो एक फीलिंग ऑफ फैमिली टुगेदरनेस वो होता था. Wow, that and Mr. Ganharji and his family, I think they are watching you today, so that's good. Excellent. And not just him, there have been actually many people. I want to name all of them, but यहाँ possible नहीं होगा. लेकिन entire community of ours in Dehradun and Mussoorie, they have been great. They have totally felt कि हमारी फिल्म है, हमारे कॉज पे बन रही है. तो वो लोग आउट ऑफ पर्सनल वो केयर एंड कंसर्न लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है. के रैना जी का मैं नाम लूंगी. उनके पेरेंट्स, एज्ड पेरेंट्स, they must be, I think 90s में होंगे. Both of them are there in the camp scenes. They have contributed immensely. You will see and you will observe. Great. So wonderful. So now a lot of people have joined us on Facebook and social media. So I just want to briefly make an announcement that please hold on till the end of the session. We'll make an important announcement about the Kashmir Files at the end of this session. So thank you all for watching. So Nirja Didi, do you want to ask Basha a few things? Yes, I have so much to ask. And Namaskar, namaskar, dear. First of all, I do want to congratulate you for something that you've been doing your adult life. That means preservation of your culture, and that is something which each one of us would want to do and would want our kids to do.
So thank you for that and congratulations for that. And I know that you've been doing, I've heard you saying that you've been doing Nukkad Nataks also, right? Have you street plays? So has any of, have you done any on our Kashmir story, something about Kashmir genocide, Exodus? So I will say, बहुत सुखद बात नहीं है कहते हुए बताऊंगी मैं आपको, लेकिन the kind of people that were there in National School of Drama when I was studying, so they did not like our part of the story, our side, you know. So they said कि भाषा तुम थोड़ा कश्मीर थोड़ा कम ही किया करो. Yes, that was the kind of environment that was prevalent in the National School of Drama those days. तो वो मुझे कहते, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ ना होता है, like as an actor you have to recreate an image. Suppose it's a dream image, some dream that recurs. होता है ना लाइफ में आपका एक recurring dream होता है, कुछ motives होते हैं. तो इस तरह से हमें काफी टास्क मिलते थे. म्यूजिक इमेज क्या है आपकी? अब मेरा तो सब कुछ मेरे कल्चर से होगा, जैसे कोई और महाराष्ट्र का कोई आता तो उसके लिए वो होगा. सो पर जब मैं कुछ करती थी, एंड देयर वाज स्पेशली वन इमेज व्हिच वाज वेरी आई कनेक्टेड, वाज होम इमेज. नाउ होम इमेज में आपको आर्टिस्टिकली एब्स्ट्रैक्ट या किसी भी तरह से अपना what is that one thing that, you know, that atmosphere about your home or something that you want to connect and just show. For example, किसी के लिए home image माँ का पल्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So artistically, now what I showed in my home image was a burnt window frame which was wrapped in barbed wires, and it was hanging in a empty studio, and there was some radio का disturbing noise, मतलब जो होता है ना उसका. So इस तरह से मेरा so they understood where I'm going. I'm going towards this aspect of my life where I'm showing that my home image is the absence of home. Absolutely. So they didn't like it, क्योंकि हमारा सत्य इतना uncomfortable type का है ना, तो I was rather मुझे रोका जाता था इस तरह से खुद को express करने से. So Kashmir Files for me has been like a catharsis as an actor, as an artist, because this is one portion जो मुझे लगा जीवन में ऐसा भी मैंने देखा contrast where I found people who were sensitive to my side of the story. This entire team and everything, they were like, हाँ कि मतलब ये हुआ और ये character ऐसे हैं, वो character ऐसे हैं, उस वक्त का माहौल ऐसे है. How could people be like that? तो I तो was very grateful कि ऐसा है, ऐसा हुआ, ऐसा हो पाया. So coming back to what I have done, मैं मतलब मैंने लॉकडाउन के टाइम पे कल्चर वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी. जैसे आपने अगर नाम सुना हो सिरचोट वगैरह, टू प्रिजर्व द क्विजीन, टू प्रिजर्व द लैंग्वेज. देयर वाज वन कॉल्ड कोकुर तछान पूत हेचान, किड्स को इन्वॉल्व किया था. सो वो मैं अपनी कैपेसिटी में मैं कर पाई और मुझे काफी मजा आया. Very nice. You know, I asked this question very candidly. I didn't even think about it, but now it connects all dots. How this genocide story was negated by one and all. And you are the youth, you're from our generation. I mean, so one is that, sorry to interrupt you, but आप जो कह रहे हैं ना, one is that they perpetrated genocide on us. Another was they negated it. Third, they barred us from speaking about it. At least चलो आप हमारा साथ मत दो, हमें तो अपनी बात कहने दो, नहीं आप उससे भी वो नहीं हो. और ये सब वहां हो रहा है जहां आपके हिसाब से बड़ा कला का मंदिर है और आपको लगता है कि यार यहाँ तो कला को प्रोत्साहन मिल रहा है. नहीं, यहाँ पे कुछ अलग तरह की आइडियोलॉजी को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसको आप कला के रैपर में लपेट के पेश कर रहे हैं. और वही हो रहा है ओवरऑल. इवन आर्ट्स में, फिल्म्स में भी यही हो रहा है. कश्मीर पर जो फिल्में बनी कमर्शियल एंगल से जो भी बनी, उनमें भी वही था ना कि भाई सत्य को छेड़ना नहीं है, बस एक जो बनाया ढांचा है उसी को आपको आगे करना है, फर्दर करना है उसी प्रोपेगेंडा को. Yeah, so right, and I agree with you कि आपकी जनरेशन ने भी अगर ये फेस किया है तो this is something everybody should reflect on. So coming back to the Kashmir Files, आपका जो रोल है, आपका जो पार्ट है इसमें, आपने खुद ही बताया कि you went through a lot of turmoil while reading the script and while enacting this. ये पार्ट आपके साथ रहा होगा काफी देर तक, और ये जानते हुए कि ये हो चुका है और आपको मालूम भी है, आपने पढ़ा है, क्योंकि हम तो यही लाइफ जी रहे हैं डे इन एंड डे आउट, एंड स्पेशली व्हेन योर पेरेंट्स आर वेरी एक्टिवली
involved and they are in activism and all, and you must have seen and heard this multiple times. How did this affect you post the Kashmir Files in your personal space? Because it affected me a lot. Even knowing it was very dark for me, very sensitive. तो मैं कह नहीं सकती, I had to close my eyes. So I can imagine आप जानते हुए जब आपने इसको enact किया, आप पे क्या बीती होगी. So I just want to know, because now that we are talking about it, so let's hear your side. So मुझे लगता है as a Kashmiri youth, while growing up, I've seen my parents out on the streets shouting and sloganeering and protesting, and so I've also become like, मैंने as an activist भी बहुत किया काम, but फिर मैंने खुद को as a cultural activist divert किया कि you know, if I can make one movie, one short film gives a message to preserve your cuisine, culture, stuff. So I think that is what my expertise would be. But मैं आपको कुछ ऐसे भी बताऊं कि मुंबई में मुझे याद है 25 years of exile जब हमने पूरे किए, यानी आज से 7 साल पहले, I completed my working day in Active Prepares. I taught students and I took a train. We went to Navi Mumbai, Khar, और वहाँ उस एरिया में हमारा protest था because we were completing 25 years. So I remember making placards with my fellow team youth, you know, Kashmiri Pandits who had come from different areas and locals भी जो खार में और नवी, तो हम लोगों ने मतलब पूरी शाम होने तक, रात होने तक बारिश में प्रोटेस्ट किया है, शाउट किया है, और अगले दिन जाके मुझे वॉइस की क्लासेस देनी है वहां पे. So the kind of life I've lived is very because so I feel very passionate about it. I feel very, and जो एक बात मैं समझती हूँ कि हम सभी कश्मीरी हिंदू, चाहे हम आज लंदन में हैं, अमेरिका में हैं या जगती में हैं, one thing that is common is that we all suffer from PTSD at some very subtle level. So I also am a victim of PTSD. I might not know it. Maybe I become aggressive at some points where I don't know, or maybe I become whatever. Maybe हम लोग थोड़े से unpredictably भी बिहेव करते होंगे. बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, है ना, उनको बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो बहुत साइकोलॉजिकल स्पेस में बात होगी. बट नाउ व्हेन यू से कि ये करना मेरे पे कैसा रहा है, हैज इट बीन रादर कैथार्टिक और हैज इट और ग्रीन कर दिए मेरे, मतलब और जख्म हरे हो गए या क्या हुआ, मैं सचमुच अभी भी इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है. बट जब शूटिंग में ये सब हो रहा था, तो आई रिमेम्बर दैट द टीम मेंबर्स, एवरीबॉडी, द क्रू एंड यू नो द मेकर्स, they were particularly very supportive. That is one thing that I should be really grateful about. And उसके अलावा मैं अभी भी मैं ये बोलूंगी कि मैं अभी भी जब सोती हूँ ना, कभी कभी मैं झटके से उठ जाती हूँ, मुझे लगता है कि वही मोमेंट में मैं हूँ, तो मैं उठ जाती हूँ. तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, बट मेरी तरफ से मुझे ये था कि कम व्हाट में, मुझे इसके बाद चाहे कुछ भी हो, पर मुझे ट्रिब्यूट देना है उन मार्टर्स को, जो हमारे जो फीमेल फोक जो जिनके साथ इतनी ब्रुटैलिटीज हुए. if life is giving me this one chance to feel what they have felt and to give a tribute from myself, my side. जैसे एक्टिंग में कंसेप्ट होता है होली एक्टर का, द होली एक्टर इज, I think that was one point where I became pure as an actor, as myself also. मतलब वो मेरे लिए बहुत cathartic रहा है एक्सपीरियंस. हालांकि इट्स स्टिल हेवी ऑन मी, आई स्टिल गेट स्लीपलेस नाइट्स, आई स्टिल, मैं झटके से उठ जाती हूँ, अभी भी मैं बताती हूँ. बट थैंक गॉड टीम अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. पता नहीं इसका पोस्ट में, मुझे पता नहीं इसके इफेक्ट्स में, आई कांट टॉक मच, बट इट्स मोर ऑफ फीलिंग. Yes, you'll be okay. And you said you got this one chance. I'm sure you'll get many hundreds of chances, because what this movie has done, it's going to do very well. I'm positive about that. And once it does well, then you know a lot of filmmakers will come forward and make movies on this theme. That is our hope and optimism. बिल्कुल, because this is one movie that will give strength to this is one movie that will give strength to many others who have been holding back on you know from saying the truth. So सबको वो courage मिलेगा. It's a trendsetter in that sense, and people will get courage to make more Kashmir Files. And because our stories need to be retold, if we are 7 lakh people in exile, we are 7 lakh stories, we are 7 lakh movies. Absolutely. Yes, absolutely. And we've seen that happening across the world, that people are talking about it, whether it's people we have never heard from before, you know, our community members
who have gone through so much tragedies. Now they're talking about it, whether it's on Twitter or Facebook or video things. I wanted to just ask you something. We had Prakash ji a few days back, Prakash Belavadi ji, and we did ask him if he found something challenging, and he said, "Oh well, Basha spoke such good, Kashmiri Hindi, with the accent which we wanted in the movie, and so did Anupam ji." And I was feeling a bit, oh my God, wish I could do that. So I think the challenge is mutual. But on that other side, you were obviously working first time with Anupam Kher, stalwarts in the movie industry, Prakash Belavadi ji, Pallavi Joshi ji. So apart from feeling ये तो double whammy है, एक तो आप you are very sentimental, it's a very emotional thing, और फिर आपको ये डर भी है कि am I delivering in front of all these stars, am I doing the right thing? मेरी वजह से रीटेक नहीं होना चाहिए. I am telling to myself कि मतलब वो होता ना, आप had it been any other movie तो चलेगा. Yes. एक तो है ना, and you have legends alongside you. और आपकी वजह से अगर रीटेक लगा, आपका कुछ गलती हुआ तो मतलब जिसको बोलते हैं ना कश्मीरी बोलते हैं ना, टेंडियो पेट वर्सेस टेंडियो पेट के. हाँ टेंडियन पेट बोलते हैं ना कि yes, absolutely, walking on eggshells, टेंडियन पेट वर्सेस. yes. एक बार गलती हुई मेरे से, एक एक्यूरेट रोल वाज बिकॉज़ क्या हुआ, एक सीन था ताफे सिंह सरी, मतलब उसमें ऐसा था कि एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, इधर से फिर उधर से लाइन कट ऐसे था, तो उसमें मैं विद जजेस. Absolutely. मिथुन चक्रवर्ती सर is looking at me ना, पूर्व भवानो ना, क्या बोब जी आए होते ना, वो बट जो हमारे होते हैं वो कह रहे हो वही. मतलब उनके मन में था उनका भाव ऐसे आया कि कह रहे हो वही डज खाए. तो मैं ऐसे हो कि मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से गलती नहीं हुई, बिकॉज मैं तो इसमें सबसे बिल्कुल छोटा प्यादा हूँ, तो सारे महारथी हैं, सो आई हैव टू बी टोटली. मैंने कहा छोड़ो प्रॉप्स क्या है, क्योंकि मैं इसमें मतलब 10 चीजें भी देख रही थी, मतलब होता है ना, आर्ट डिपार्टमेंट के साथ भी हूँ, तो पीछे उनको बोल रही हूँ भैया इस सीन में कहवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, होता बहुत. तो मैंने सोचा उस वक्त नहीं, इस वक्त सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दो, बाकी सब तो मैं कर ही रही हूँ. So बहुत responsibility. Yeah, I think the fortunate bit has been that the whole team has been so supportive. We've talked to a few of the actors, not to Mithun Chakravarti and Anupam ji, but the rest, and they all seem so nice. They are very down to earth, very supportive. And विशेषकर अनुपम जी के साथ तो क्योंकि मेरा था ही वो उसमें, मतलब फादर इन लॉ, तो इसे टुगेदर ही इन मोस्ट ऑफ द सीन्स, तो उसमें बना कि सुशक थोड़ा सा मतलब थोड़ा बासनजाद सॉर्टेड हिज थोड़ा सा, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर, थोड़ा सा. तो वो मुझे पॉइंट पे ना कुछ एक छोटा सा मंत्र दे देते था, तो उसमें कहती थी अच्छा ठीक है सर, जैसा भी वो, क्योंकि उनके लिए तो क्या है, उनको तो ऐसे वो माइंड पढ़ लेते हैं कि होता है ना सामने वाला एक्टर नर्वस हो रहा है या क्या है. बहुत हेल्प मिली मुझे, बहुत. एंड एक और बात बताऊं कि खासकर अनुपम सर के साथ मेरा रियल में ऐसा रिलेशन रहा कि जाने से पोएजी पोएट ना, क्या बोलते हैं, रिलेटेड रिश्तेदार, जैसे माज पत्थर बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, बापतपुर. बहुत फादरली, क्योंकि सुटोस आसन फेरन सिनित throughout, बिटिस आसन फेरन सिनित, कांगरा है तिस आसन पाकान, ऊपर से सर्दी भी थी, -2 का टेम्परेचर था मसूरी में, तो पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा था जाना पोएजी ना, मतलब जब शाम को जब रैप अप होता था लोग अच्छा ये अनुपम खेर सर है. मैं जस्ट अनदर एक्टर हूँ, वी आर जस्ट, इट्स जस्ट अ शूट दैट्स हैपनिंग. तो बड़ा इल्यूजन बड़ा गजब का था. Absolutely. मिथुन दा जब यहाँ थे और हम मिले उनसे, उन्होंने आपके काम की बहुत तारीफ की. Great of him, so great of him. So he is very proud of you. We talked to him and he said Basha has done a phenomenal job. So go ahead, Shafalika. Sorry. No. I was just amazed at what, but I can imagine, the community is such, we kind of have this unique kind of traditions, and the way we talk and the way we get on with each other. We connect on a very different level. Yeah. It happens. मतलब होता है ना, एक छोटी सी जीर देना तो आपको समझ आ जाता है कि किस बात पे क्या जीर दी गई है, तो वो फेलो कश्मीरी समझ जाते हैं ना, वो जो एक होता है हल्का सा, मतलब सपोज मैंने आपको तो वो बड़ी सटल चीजें होती है, बट so sweet of Anupam Kher ji to really come down to my level and be that intimate with me in सब चीजों में, होता है ना छोटे मोटी चीजें होती है.
And Yeah, I mean, Mithun sir तो throughout he would talk about acting pedagogies around the world और ये मेथड वो मेथड, और मतलब बहुत ही मतलब एनलाइटनिंग होता था उनके साथ बैठना. एंड ही वुड से FTI में क्या पढ़ाया जाता है, NSD में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बहुत टेक्निकली वो बात करते थे. एंड सो ग्रेट ऑफ हिम. इनफैक्ट उन्होंने अमेरिका से फोन भी किया था ये बोलते हुए कि मैंने आई सॉ द फिल्म एंड आई लाइक्ड योर वर्क. आई वाज उस दिन तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, और मैंने कहा प्लीज मेरे मम्मी पापा से भी बात करो. ते मनते तज ना काथे करें वो भी ऐसे हो गए. Okay. Yeah. I know. So master class with the masters. So आपका तो हो गया. So you know that is so amazing, wonderful to hear, Bhashas. That is so nice. So obviously looking forward to see more of you in other movies. Is there anything in the pipeline? Have you got any theater production or anything going on at the moment? I've just finished a theater workshop in Jammu because I wanted to go back and contribute something to the land that has given me everything actually. क्योंकि जम्मू में ही सब स्ट्रगल करके पाया है. जम्मू है ना, तो मैंने बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता था इन दिनों सब. आई वाज सो बिजी. तो मैंने आई टुक आउट टाइम. 2 महीना मैंने वहां के जो यूथ को एक एक्टिंग वर्कशॉप दी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव. आई हैड अ थिएटर फेस्टिवल ऑफ 4 days. आई ऑर्गेनाइज दैट. तो अभी मेरा जो प्ले रुका हुआ है, आई एम वर्किंग ऑन दैट. I hope to organize that soon. And बाकी देखते हैं. Absolutely. I'm sure people who are watching you, I hope some youngsters are watching you, and they will get inspired. Yeah. So I want to act in films, and उससे ज़्यादा I want to make films. So जो मेरी short films थी, they were just my attempt at the same. जो कश्मीरी में मैंने किया to reach out to my community especially. So तो मैं इसलिए भी, मैं कश्मीर फाइल्स पे जब सेट पे होती थी तो मैं विवेक सर के आसपास ही घूमती रहती थी कि क्या किया, एक्सिस क्या लगाया, कैमरा क्या लगाया, लेंस क्या लगाया. क्योंकि मैं FTI तो मैंने किया नहीं है. आई एम फ्रॉम ड्रामा बैकग्राउंड. सो जो टेक्निकलिटीज ऑफ फिल्म मेकिंग होती हैं वो सीखने के लिए ना, जैसे हमारे DOP सर सो कूल, उदय सर, उनके साथ आर्ट डायरेक्टर सबके साथ ना मैं सोचती थी मैं जितना जहां से थोड़ा थोड़ा सीख लूं, ले लूं. एक बार तो मैंने क्लैप भी दिया एक सीन में. और वो शायद गलत भी हो गया. कोई बात नहीं, चलता है. Well, Basha, don't worry. So Basha, you are on a winning wicket. I'll tell you why. Because I think Prakash only he said कि एक तो कश्मीर की हिस्ट्री है, नाट्य शास्त्र की, which most of us are not aware. So after he said, I kind of looked a bit into that. Because we are more focused on doctor engineer, like I said, IT. There is such a tradition of Natya Shastra from Kashmir. Yeah. And I'll tell you one thing. कि नाट्य शास्त्र से मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ. मैं कुडियट्टम में मैंने क्यों इतना स्पेशल इंटरेस्ट लिया. एक तो हुआ कि 3-3 महीने का आपको इनपुट मिलता है. यू स्टडी ब्रेक्ट, यू स्टडी एलिजाबेथन थिएटर, यहाँ का, वहां का, जर्मनी का, लंदन का, इंडिया का भी, फोक वगैरह सब तरह का चीजें इन NSD. बट जो ये 3 महीने का मुझे कुडियट्टम का इनपुट मिला, I made sure that after I finish NSD, I'm going to go for a specialized learning of this form in particular. Why? Because Kudiyattam, the 3,500-year-old form of Kerala or India, is basically the practical execution of the text of Natya Shastra. Wow. Which is written in Kashmir. Absolutely. So as a Kashmiri artist, I'm very grateful to people in Kerala who have actually, उस टेक्स्ट को उन्होंने एग्जीक्यूट करके एक एक्टिंग मैनुअल फॉर द एक्टर्स उन्होंने उसमें बनाया है. तो एक वहां पे जो राजा के मतलब सुपरविजन में होता था ना आर्ट्स को, वो लोग काफी प्रोपेगेट करते थे. तो ये बहुत ही प्राचीन तरीके से वो. अच्छा, वहां पे जैसे आपने अगर नाट्य शास्त्र में कुछ लिखा है, सपोज कोई श्लोक है, ठीक है, यतो हस्तस् ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रस. तो कहाँ से हाथ की मुद्रा से, नेत्राभ्यास से, भाव से, रस निष्पत्ति तक हम कैसे पहुंचते हैं. श्लोक पढ़ने वाली चीज तो है नहीं नाट्य शास्त्र, वो एग्जीक्यूट करने वाली चीज है, इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है, जो केरला में हो रही है. तो आपने कश्मीर में कुछ लिखा किसी पंडित ने, स्कॉलर ने, और वो किसी ने एग्जीक्यूट किया केरला में. So the greatness of this form is such that, so I
as an artist from Kashmir, have to learn Kudiyattam. Have to learn Kudiyattam. Is so important for me. Absolutely, it is. And that's why I got that scholarship and I went to, सिर्फ 4 लोगों को वो scholarship मिली थी भारत में, और मैंने कहा कि मुझे कुडियट्टम सीखना है. So उस scholarship में आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं. तो मैंने कहा मुझे कुडियट्टम सीखना है as a contemporary artist. How they focus on breathing, how they focus on bhavas and rasas, which is again concept तो नाट्य शास्त्र का है. मैं regionalism में नहीं आ रही हूँ. मैं regionalism में नहीं आऊंगी. But it's that's the history. No, but that's our history. That is the beauty of Bharat. Beauty of Bharat. Yes. So one thing from one state and then Kerala kind of it is being executes preserved. it. It is being preserved in Kerala. Absolutely. It becomes my moral duty as a Kashmiri to go and learn that. जो उन्होंने master किया हुआ है. Absolutely. That is so wonderful, Basha. So nice to hear that. And the second thing I was telling you why you're on a winning wicket is the sense of humor that is innate in our community. So मैंने आपका video देखा which you did, I think with your grandmother, I think. Was that your grandmother? Yes. Jigri. So, you know, so a sense of humor is part of us. You know, आप Sesame Street भी कर रहे हो तो, you know, you are dubbing for that, the Indian Kashmiri version of Sesame Street. So एक तो है environment तो है humor, you know, there's humor all around us, so you know you can work on that as well. So you got. I think everything. Humor is one of the things in our DNA that has got us, you know, going. Absolutely. Otherwise, yeah, like they say, if you don't laugh, you'll cry. So you know that's what I say to myself. If I don't laugh or make funny things, I'll cry. So it's either one. Humor is the हमारे अपने ऊपर सबसे बड़ी बात वो है. वो humor बनाते हैं. Whether it's the way we pronounce, the way we say things, the way we pronounce English, Hindi, और किस तरह से हम उसका murder कर देते हैं. तो वो हमारे लिए I think it's a big thing. And मतलब जैसे मैं अपने घर में मम्मी पापा को टोकती रहती हूँ कि पापा अगेंस्ट नहीं होता है, अगेंस्ट होता है. यंगेस्टर नहीं होता, यंगस्टर होता है. तो फिर पापा कहते, फिर वो भी मुझे जाग रहे होते हैं, ये कब हिंदी में गलती करेगी तो बोलेंगे ये कहते हो हिंदी करानी, कोशर हिंदी करानी. So there's Kashmir Hindi and there's Kashmir Angrezi, which we do with our children here. So you know we spell words. You know my favorite one is I say Kenya. You know Kenya because my children say no mom, it's not Kenya, it's Kenya. It's not Bahrain, it's Bahrain. So I'm saying, oh my God. So ये तो हमारे जीन, ये तो चलेगा ही अब generations में चलेगा. So thank you, Basha. Nisha Didi, did you want to? We got Surinder, Dr. Surinder Cole from Houston. He has joined us, and Utpal ji from India. Like I said at the beginning, that they are going to make some announcement related to the Kashmir Files screening in India. But while they're getting ready, Nisha Didi, here you go. One last thing for Basha before we hand over to Surinder ji and Utpal ji. Basha, March 11 को movie release हो रही है और हम सब कोशिश कर रहे हैं. कोशिश क्या करनी है, हमारी कहानी है, हमको हमारा फर्ज बनता है, हमारा एक दायित्व है कि हम इसको प्रेजेंट करें लोगों के पास. सो एज ए यंगस्टर, आप यंग जनरेशन के हो, मेरे बच्चों जितने जैसे हो आप, और आप इतना काम कर रहे हो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के लिए, इतना आपने जो आपने बताया वो तो मुझे लगता है कि इवन आई कैन नॉट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स दैट यू अकम्प्लिश्ड ऑल दिस व्हाइल just in a short span of time. What is your message to your generation or generation younger than you, like my kids? How important is it for them to watch this movie, which really you know, conveys what actually happened, and how important is it for them to know and to carry this message forward? हाँ, तो क्या है कि मुझे लगता है हमारी अपनी कम्युनिटी की जो जनरेशन इस वक्त है, यंगस्टर्स हु हैव नॉट मच ऑफ कश्मीर का पास्ट या मेमोरी या इवन बॉर्न आउट ऑफ कश्मीर, तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि what happened to their grandfather and fathers and mothers की generation and even to them, and what impacts it has left on us as a people. Secondly, also because because young impressionable minds होते हैं, तो जो fake narrative चलते हैं वो unfortunately victims पर भी असर करते हैं, and the victims feel that whatever happened to us was justified because you know तो या they were right because वो सताए हुए लोग हैं या जो भी हैं, या हम कायर थे, you know, या एक और चीज है बहुत important, या हम तो ब्राह्मण्स थे, you know, जो एक एंटी ब्राह्मण जो हेट्रेड के अम्ब्रेला में हमको भी जस्टिफाई किया जाता है कि अब तो पंडित थे ना, अब तो पंडित हो तो you know how will the rest of the
people or say Hindu community for example, how will we connect? यहाँ पे तो casteism आ गया. So you have to know, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, बिकॉज ज्ञान बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि आप जानिए कि पंडित का मतलब सिर्फ ये है कि चूंकि ये देश शारदा देश रहा है, स्कॉलर्स का देश रहा है, इसलिए पंडित. सिंपली अभी हम बोलते हैं ना ट्रेड पंडित, पॉलिटिकल पंडित, वही वाला पंडित है और कोई पंडित नहीं है. क्योंकि कश्मीरी पंडित वो समाज है जिसमें मैं स्वयं ही पंडित भी हूँ, शूद्र भी हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, सब कुछ हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, जो भी है, वैश्य भी हूँ. अभी मैंने खुद अपनी हेरथ की पूजा की है. कल हेरथ, आज मैंने वटुक परमोचन किया. मैंने खुद वो किताब पढ़ी है, खुद बोला है. तो आई वाज द पंडित जी. And at the same time, when I clean my house and do other stuff, I am the Kshatriya. So हमारी community is all encompassing. We are the caste-less society. I don't know और कोई हिंदू समाज में ऐसा है क्या? I would wish कि सारा हिंदू समाज ऐसा हो, caste-less हो. लेकिन एटलीस्ट कश्मीरी पंडित को जब ये ब्लेम लगता है कि भाई तुम तो पंडित हो, अरे वी आर द पीपल, हम तो हमारे घर में 2 बर्तन नहीं होते, 6 बर्तन, शूज बर्तन, इनके लिए, बाहर के लिए, इसके लिए, ऐसा नहीं होता है ना? So it's very important to know your cultural history, जिसके आप लिंक है. आप 5997th year चल रहा है आपके सप्तर्षि संवत का. Our young generation needs to know that. As a soul, you are 5097 years old. As a Sanatani soul. Yeah. Secondly, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आपके साथ हुआ क्या है, आप किस कल्चरल लेगेसी को बिलोंग करते हैं, तब तक आपको प्राइड, वो हर्ट नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है. अभी की जनरेशन में आई वुड से अनफॉर्चुनेटली सम पीपल आर लाइक, हाँ ठीक है ना, नाउ वी आर सेटल्ड, बैंगलोर, बॉम्बे, व्हाटएवर. वी आर नॉट सेटल्ड. माय मैसेज टू यू इज वी आर नॉट सेटल्ड until we get justice, until we get our homeland back. We are not settled. Wherever we are, we are exiled. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. अभी हेरथ थी, मैंने अपना एसी 17 पे रखा था, 16 नहीं होता, 17 पे रखा था पूरे 4 दिन, क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ और मेरे अखरोट खराब हो गए थे पहली हेरथ पे. और जब मैंने हेरथ की पूजा की थी, उसमें जो मैंने आपको कहा ना, मैं वाटुक पूजा की किताब से पढ़ती हूँ, मैं टेप से नहीं देखती. मेरे को संस्कृत लकीली बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स बैकग्राउंड आती है. तो उसमें लिखा था लास्ट में, करते ना, धूपम दीपम पुष्पम अर्घ्यम समर्पयामि, उसमें था हिम. इसमें हिम डालिए, मतलब अपने आंगन की बर्फ डालिए. Now tell me what it does to me as a Kashmiri in exile. अब मैं बर्फ कहाँ से लाऊं? I'm in Mumbai, मेरे तो ऑलरेडी अखरोट सड़ रहे हैं. So my festivals are endangered. ठीक है. So ये जो खतरे हैं, ये बहुत खतरनाक खतरे हैं कि my festivals are my identity वो डिसॉल्व होने की कगार पे है ना. जो मेरी एक विशेष 5097, जब मैं कहती हूँ ललितादित्य की लेगेसी, लल्लेश्वरी की लेगेसी, आचार्य अभिनवगुप्त की लेगेसी, ये सब जो खत्म होने की कगार पे, ये हमें एकदम से रोक के हमारे यंग जनरेशन को बोलना है कि वॉच दिस फिल्म एंड द ट्रूथ दैट इट स्टैंड्स फॉर. हैव द करेज एंड हैव द नॉलेज टू स्पीक दैट ट्रूथ, बिकॉज नॉलेज के बिना कोई मतलब नहीं है. पहले आप पढ़िए, क्योंकि जैसे ये फिल्म भी बहुत लंबे और गहरे रिसर्च का एंड प्रोडक्ट है. सो आई थिंक बिकॉज वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ शारदा, हमें तो हमारा तो फर्ज है कि सत्य को जानकर, ज्ञान को जानकर, असत्य को हम काटें. So it becomes our moral duty. I think that would be my message to the youth of my community. आशा, आप बहुत पावरफुल स्पीकर हो. You are amazing. You have to take this as a compliment. You are an amazing speaker. The way you speak and the way you communicate to the point. Not everybody has that art. So thank you. Be proud of that trait in you, and we wish you all the very best. I'll hand over to Shafalika. So thank you, Basha. That was so interesting about Herath, and that reminded me, what we struggle with as well is खाना जब बाहर डालते हैं ना चिड़ियों के, यहाँ वेस्ट में कोई चिड़िया खाती भी नहीं है वो खाना. So it's such a बाहर खाना वो 1 मिनट तक पड़ा ही रहता है. I don't know what it is, because वहाँ कश्मीर में खाना बाहर डालो, within a few minutes it was gone. So that is the kind of cultural genocide we are facing. So thank you so much for that. And so now we go to Dr. Surinder ji. Surinder ji, welcome to you. You wanted to say something towards the end of the session. We are not at the end, we are nearing the end, but if you want to come in. Yes, namaskar to everyone. Namaskar, Basha. Namaskar, Mara, namaskar. I don't know how to address you as a Basha, as a community daughter, Basha as an activist,
or Basha as a celebrity actor? Namara community daughter, always, always, Good. first and Okay. foremost. I should commend you. I saw the movie The Kashmir Files, and I was privy to what was happening on the sets also, directly, indirectly. You have done a mind-blowing, outstanding acting, and congratulations for that. Thank you, sir. You Thank have made us Was- proud. Now, from after 11th, India will see you in a different way. And Thank you, before I share, I ask you one question. What has been the wow factor and what has been the lowest emotional factors during this journey of the Kashmir Files? वाओ फैक्टर तो यही है सबसे पहली बात कि ये फिल्म बन रही है. जब मुझे ये पता चला और जब ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि नथिंग वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड एज वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम विवेक सर, क्योंकि ताशकंद फाइल्स देखने के बाद सर से एक्सपेक्टेशंस पूरी देश की दुनिया की इस वक्त जो हैं, जैसे भी हम सब जानते हैं कि कितना इस मूवी का बज है, बिकॉज पीपल आफ्टर ताशकंद फाइल्स वांट टू वॉच द ट्रूथ अबाउट द कश्मीर जेनोसाइड. तो वो मेरे अंदर भी था कि एंड जब मुझे पता चला फाइनली कि इट इज वन मूवी जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सत्य के साथ, इतनी ब्रेव तरीके से इसमें सत्य को उजागर किया जाएगा, और जब मैं इसका हिस्सा बनी तो ऑब्वियसली आई हैड ऑल द डिटेल्स कि क्या क्या हम दिखाने वाले हैं, क्या क्या इसमें होगा. So the biggest wow factor was the movie itself and the fact that I was a part of it in any capacity, because जब मुझे पता चला ये फिल्म बन रही है तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैंने एक प्रण किया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन के रहूंगी, because that's what I am very passionate about. and मैं आर्ट्स भी इसीलिए मैंने आर्ट्स की लाइन चूज की, because मैं अपना ये जो कॉज है इसमें आर्टिस्टिकली और क्रिएटिवली एज ए कल्चरल एक्टिविस्ट कंट्रीब्यूट कर पाऊं. तो मैंने सोचा जिस भी कैपेसिटी में मेरे लिए, चाहे एक्टिंग का रोल हो, कोई मतलब संभावना उसकी हो या ना हो, बट एज एन असिस्टेंट, एज एनीबॉडी, रिसर्च में, टीम में, किसी भी टीम में मैं जुड़ूंगी इसके साथ. और फिर जब मुझे पता चला मेरे लिए शारदा पंडित के रोल के लिए सर ने कहा, सो नोइंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द मूवी एज एन एक्टर एंड एज जो भी मतलब टीम का हिस्सा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा वाव फैक्टर था. और लोवेस्ट फैक्टर की अगर बात करें तो देयर वाज नो लो फैक्टर, ऐसा लो वाला कुछ भी नहीं था. थोड़ा लो नहीं बोलेंगे, मैं लो तो ऐसा नहीं, चैलेंज ही चैलेंज थे. जब कुछ चीज वाव होती है तो उसमें चैलेंज भी उतना ही वाव होता है. तो चैलेंज थे बहुत. मैं कैसे बोलूं उसको कि जैसे एक मान लीजिए एक्टर को ऐसे कहते हैं कि एक्टर इज द वन हु फील्स द करंट ऑफ द इमोशन एंड अपने पे फील करते हैं सो दैट द ऑडियंस फील्स इट, है ना. सपोज कहा लोग तारे विचिती डरान ने तारे लागून जरूरी के हैं, तो वो जो तारे लागून होता है वो इतना बड़ा चैलेंज होता है एक्टिंग के लिए. यू लेट दैट होल इमोशन रन डाउन थ्रू योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल एंड साइकी. तो वो एक चैलेंजिंग चीज थी जो मुझे नहीं पता मैंने कैसे निभाई. क्या ये माँ शारदा की कृपा थी. पहला दिन मुझे याद है जब वो हुआ ना, जब नारियल फोड़ा मुहूर्त शॉट जब था सबसे पहला, तो मुझे ही कहा गया कि कशर तो कुछ पढ़ दे भगवान जी का कुछ. तो मैंने मुझे याद है मैंने उस दिन क्या किया, एक तो इंद्राक्षी पाठ पढ़ा, बिकॉज दैट इज वन थिंग सो इननेट टू अवर कश्मीरी कल्चर. कभी भी कुछ भी होता है इंद्राक्षी पाठ पढ़ते हैं रक्षा के लिए, एक वो पढ़ा. और मैंने, क्योंकि नंदकिशोर भैरव मेरे इष्ट हैं, तो मैंने उनकी स्तुति पढ़ी. और फिर मैंने कहा अब ठीक हो जाएगा सब, अब कुछ दिक्कत नहीं है. एस नंदकिशोर स्वीट मतलब मेरे लिए वो थी. और सचमुच इस फिल्म में इतने चैलेंजेस थे, इतना सब कुछ था, बट देयर वाज अ डिवाइन प्रेजेंस दैट वाज हेल्पिंग अस ऑल एंड एवरीबॉडी फेल्ट दैट. तो बहुत चैलेंजेस से फिल्म बनी है. My lowest thing was pertaining to panic attacks. Did we have to cancel the shoot? नहीं, मैं उसको तभी मैं बोलूंगी, उसको लो नहीं बोलूंगी मैं उसको. That is challenge. That is a No. challenge. So what I mean to say, I know that living again those experiences definitely Can't be a low. क्योंकि मैंने पहले भी बोला, एक यज्ञ हो रहा है, और उसमें आपको आहुति देनी है. तो उसको लो थोड़ी ना बोलेंगे. आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे वो आहुति देने का मौका मिला और उनको ट्रिब्यूट देने का मौका मिला. Yes, you did talk about your challenges, and one of the things you said about the panic attacks and anxiety, and that is a part of now our DNA. I think all of us are struggling at some point or the other. right. Yes.
So I just want to share the information in real time with the community and all those outside the community who are watching this, that the Kashmir Files is it's a mind-blowing movie. And it is inspirational. This has happened with our community. But my message to the people outside our community is that, life is a wheel of fortune, that today you are everything in control and the next day you are coming onto the roadside. It will give you the resilience. It will give you that courage. Watching this movie, there is a learning experience for everyone. I request you all to watch this movie with your kids. I will guarantee you that your kids will learn a lot and it will make them a wonderful person moving in this life and talking about what justice is. Certain plans, but before I share, I know Utpalji is here. Utpalji, Shafalika ji, I request you to let him also speak, and then we will roll out the plan. So Utpalji is here, and Utpalji, you are muted. He's here now. Utpalji, we can't see you. Can you turn the camera on? He's actually. I am on the road. I will. Oh, you're on. Okay. No worries. No worries. Aap aaram se kijiye, sir. So Utpalji is going to share about the India plans for the Kashmir Files movie, which is being released on 11th of March. But there's plans to obviously promote it. It's our movie, so every one of us, each one of us, has to go out and promote the movie in our circles, to the wider community. In US, they did it so well. There's a lot of learnings from there, and we will do it in UK, Germany, Singapore, Australia, New Zealand. So we'll all do it together. But the point is really not just to watch it yourself, but to get your friends, other communities, neighbors, get them to watch as well. So so that is. But I'm, from what we have heard, and the mind-blowing trailer, it's going to be an amazing movie, and we are hoping that the hope is that it stays in theaters for 1 year. And that is what we are going to be working towards, keeping it running in theaters for 1 year. So, Utpalji, are you there? Yes. Shafalika ji, thank you very much. Namaskar. Namaskar. Namaskar, my daughter is speaking in the show, so I will have to first say a few words, and not few words. I really wanted to elaborate or explain which she said, and it was a mind-blowing session. Basha, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा. And today you have proved that you are from Nandakishwar's family. And let me tell you, whenever I was going to your home, and you can ask your dad, that your grandfather was calling me Nandakishwar. Because Pardo Hatavan, Darwaz Putravan, Tahris Asam Puja Kara, the one Nandakishwar Bairavasa. You said about Nati Shastra, and let me tell you that in Kashmir it was performed. Oh. And you must read how Abhinav Gupta was explaining. जो अभी हम बोलते हैं कि जब एक्टर होता है, जो एक एक्टर होता है, उसको पात्र दिया जाता है, उसमें घुसना है उसको. और अभिनव गुप्त ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसको मतलब एक डिटेल थी, और ड्रेस में, मेकअप में, मतलब कितने एडवांस थे कश्मीर के. और I may tell you that I have done theater for nearly 10 years, और 100 बार मैंने स्टेज किया है. And I want to dedicate हरिश्चंद्र, हमारे कश्मीरी ट्रेडिशन में सचवादी हरिश्चंद्र का कश्मीरी में ये नाट्य होता था. अच्छा. तो इसमें एक डायलॉग है सत्य पर. अच्छा. जो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में है.
भवन कर डेडिकेट थे सत सत अटल सत अचल सत राज हरिश्चंद्र सुन सत पुटरावन बोल कुस माज जाव ही राजीम संकल्प त्राव राज ताज नित करम खार मगर सत पन दियस तार एंड सो युसन सत सोन जो हमारी सच्चाई है वही हमारी जीत है हमारी ये जो कश्मीर फाइल है द कश्मीर फाइल इज अ डिवाइन इंटरवेंशन It is. and it let is. me tell you that I told when we had many times we met hello हाँ जी, हाँ हाँ जी. जी, हाँ जी, बोलिए हाँ, बोलिए उत्पल जी। ऐसा है मैं हम जब अग्निहोत्री जी से मेरी पहली मुलाकात हो गई मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू थैंक यू बिकॉज फॉर गुड कर्मा देयर इज नो थैंक्स एंड ये सबके प्रारब्ध में नहीं होता ये सबके नसीब में नहीं होता कि इतना अच्छा काम करना और ये देश में और पूरे भारत में पहली बार ये हो रहा है एंड वी आर सो लकी दैट माय डॉटर Basha is in it and that is also again a divine intervention. Both parents have worked very hard for all these I guess because your dad and me we are there for 50 years together and so it is a divine intervention that you got role in it and you have done it superbly and because I have not seen the movie but what Nirja ji, Surinder ji and others have told you your role has been exceptionally fantastic and I feel proud of you and I am so proud and one more thing I have to tell you that let me tell everybody that this film is going to be super duper and because of that there will be time is coming that 100 movies like that will come more directors more producers more financiers will come forward to finance for such projects. And at last, one more thing about my own self, which I don't really tell people, that I was only 18-year-old when I was a resource person for Bobby movie. So I arranged 50 girls for Raj Kapoor. And my younger sister got to work in Bobby, in Roti, in Khoon Pasina, and then in Southern Pictures. But I don't tell about these things. And one day, I told in Ranawari to my friends, the time is going to come when our daughters, our sisters will work in Bollywood. People laughed on me that it is not going to happen. I'm coming. Yeah. Time will come that our children will show great path in each and every path and the narrative will be set by us and leadership is given by us in every field, whether it is Bollywood or any other field. Absolutely, Utpal. I was very much excited because of Basha and because of Thank you. What she said. I was listening for 1 hour in rapid attention, although I am in car. Utpal ji, can you turn your camera on? We cannot see you. Okay, now let us move. We are running short of time. No, it will be, time ही waste. अच्छा, अब ऐसा है कि 4 तारीख कल तो जम्मू में इसका मतलब स्क्रीनिंग हो रही है and as I talk to people who बादशाह जी भी है उसमें और ये विकास जी से भी बात हो गई है. Everything is set and I think it will be a very, very exciting, successful and media will take it very widely. बहुत अच्छे से ये होगा. और 6 तारीख को दिल्ली में let me walk that through. Let me walk that thing. Okay. Please go ahead. So basically, I will just share with the community and non-community members who have joined about what to expect. So can we put everybody on mute? Yes. Yeah. So, first of all, this is a movie which is our story. And everybody has to stand up because this is your story. And whether you are an activist, whether you are non-activist, this is your moment of time. I want every individual
to take ownership of this movie and thinks what to do. Now, you know that it is released globally on March the 11th. It has already had around 15 screenings in US and about 25 impact screenings in various universities, including Capitol Hill in US. This is a movie which is not about bashing. It's not about Hindu, Muslim, or it is the true story, the way it unfolded. And it's also a movie which tells you about the situations at that time. How was the reaction of the what was the political failure? What was the system failure? What was the role of the media? What was the role of the people around? And you will personalize it. Those who were kids who were born, it is your movie. Your parents who struggled, it is your movie. Those grandparents who struggled, it is their movie. All activists who have contributed immensely in this journey, it is your movie. This is time for everyone to stand up and take its ownership. How can you do that? We are trying to see this movie. We will be seeing this movie. The whole community will be seeing this movie on March the 13th. And this will be our global way of demonstrating that we exist. Now, please get in touch with your local sabhas in India. We are in touch with all the sabhas. Like Faridabad Association has already booked a theater on 13th of March. And similarly, if you are in Noida, please get in touch with your KP Sabha Noida. If you are in Gurgaon, please get in touch with KP Sabha Gurgaon. You know, we are smart people. We have a huge influence on our people with whom we associate. Whether you are living in a society, please take leadership, take ownership, talk about this in your society. If you're not seeing any sabha in your area, or if you're having any difficult time, just arrange, book a theater yourself where it is being released. Collect 100 people, collect your volunteers there and drive it. And keep this chain going. It's not only 13th, we are watching it together as symbolic all over the globe, but we have to keep this momentum running. We have to keep this thing running, and everybody will have to become a volunteer, will have to think out of box and see what we can do. I have been receiving lots of messages. Hey, I want to book a theater in Gurgaon. I want to get all my friends there. Yes, this is a movie that you should see it together. You should sob together. It will be a good experience, a catharsis for all of you when you watch this movie together. It will give you a feeling of oneness. Please do that. So we are in touch with all the sabhas. There are some private screenings which are scheduled. I believe in Jammu, it is on 4th of March. In Delhi, it's on March the 6th. Then similarly, we have in Pune, Hyderabad, in Mumbai and Bangalore before this movie is getting released. So do write about it. Use social media in the best possible way. And on 12th March, you know, Kashmir is our Janu. I mean, so leaving aside Hindu, Muslims, any binaries, Kashmir is our Janu. And 12th of March, we will be assembling at Jantar Mantar to demonstrate that we exist. In next few days, you will see a lot of things being rolled out. We have to also tell the government of India that we exist. We exist. We have to show that collective ethos. We have to show that collectiveness. And for that matter, whosoever is living in NCR, please do come to Jantar Mantar from 4 p.m. to 7 p.m. on March the 12th. As I said, Kashmir is our Janoon. It is my Janoon. I will be coming from US
for just few days, just 5-6 days, just to set it in. And that is the commitment, that is the dedication we all need to show, and we all need to do. This is your moment. This is your time. It is not Vivek Agnihotriji's moment. He did what he has to do. But this is each one of us. It is our moment. And let us use it in the best possible way. My take is that the peace in Kashmir will be through us. The progress, the development will be through us. And we have to ensure that Kashmir becomes a new Kashmir, where everybody lives and respects everybody's value and sentiments. With this message, I once again request you all that this is your moment. Don't let it go waste. This is once in a lifetime opportunity. We are not sure whether such an opportunity will come again. Please use this. Use this to everybody's advantage, and use this for peace, not with the intent of spreading hate. So this request, I again thank Basha. She has been an inspiration. This is again the moment, whatever things you believe, this hard work that all Sabhas have done to nurture our, preserve our culture and heritage, preserve everything. Everything, if you have disagreements, you don't like me, doesn't matter. The cause is important. Come together, demonstrate that we exist. So back to you, Shafarika ji. Thank you so much, Surendraji, for those powerful words. Obviously, everybody is waiting now for the movie to be released, and of course the demonstration at Jantar Mantar. So on that note, I would like to thank Basha. Basha, it was really, really wonderful to speak to you. You are going to you're on mute, Basha. So you are going to inspire a generation. I can tell you now. Yeah, good luck in whatever your endeavors are. And thank you, Nirja Didi, as usual, being my co-host. We always do things together. And thank you, Surendra. Thank you. Namaskar, Utpalji. Thank you for joining. Thank you, Okay, Basha. namaskar to everyone. Thank you. Namaskar. Wonderful. Bye. Thank you, Didi. God bless you and all success. And Thank be you, Didi. ready Thank you. for many offers that you're going to get, because you've done a wonderful job in the movie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.